सभी को राधे राधे। आप सब में विराजमान ईश्वरी शक्ति को मेरा प्रणाम। मैं आरोग्यम वेलनेस पाथ से आपकी सारथी प्रतिभा शर्मा। हमारा अभी भगवत गीता के बहुत सारे अध्यायों के बारे में हम बात कर चुके हैं। बहुत सारे चैप्टर हमारी छोटी सी सारथी आशका अग्रवाल जी ने आपको सुनाया है। आपने सभी सुने होंगे, नहीं सुने तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप सुन सकते हैं और जरूर उसका लाभ ले सकते हैं। आज को जो हमारा 16वां चैप्टर है उसकी हम बात करेंगे आशका अग्रवाल जी के साथ। वो हमें बहुत ही मीठे शब्दों में सुनाने वाली है। आप लोग सभी ध्यान से सुने। आशका जी, स्टार्ट करें आप। Namaste everyone. I'm Ashka Agarwal from Hyderabad and I'm 11 years old. Today we are starting chapter 16 of the Bhagavad Gita. It is called Daivatsura Sampat Vibhaga Yoga. In simple English, that means the yoga of the division of divine and demonic qualities. In chapter 15, Sri Krishna Bhagwanji explained that every living being has a soul and that soul is always connected to God. He also described the whole of creation like a tree whose roots are in God. Now, in chapter 16, Sri Krishna Bhagwanji talks about two kinds of qualities that exist in people: good qualities and not so good qualities. And he explains which ones bring peace and which ones bring trouble. Let's see what Sri Krishna Bhagwanji explains to Arjuna through this chapter. Before beginning the recitation, let us pray together. Om Sahana Vavatu Sahana Punaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Now I will begin the recitation of chapter 60, Daivatsura Sampat Vibhaga Yoga. Om Shri Paramatmane Namaha. Shrimad Bhagavad Gita अथ षोडशोऽध्यायः दैवात्सुरसम्पद् विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभ्यं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारश्चमेव च अज्ञानां चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् जातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरीं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् मन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवान्त्युग्रकर्माणः
श्रेयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् प्रमाणमतान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहाः वर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयं च नैयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतवदति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्या लब्धम् प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे वेश्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः यश्चेचापराणपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽपि जनवाणस्मि योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य त्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः अजाला समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितः स्तब्धाः तन्मानामदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽप्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना वृथा जन्मनि जन्मनि मम प्राप्यैव कौन्तेय तो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधोस्तथा लोभः स्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्थितिर्नरः अचरत्यात्मनः श्रेयः तो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति सुखं न परां गतिम् तस्माच्चस्तं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीदैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः. Now I will explain you the simple meaning of chapter 60. In this chapter, Sri Krishna Bhagwanji talks about two kinds of qualities in people: good qualities and not so good qualities. Good qualities are things like being honest, being kind, being fearless, being humble, and having compassion for others. Not so good qualities are things like being greedy, being angry,
being proud, and thinking only about yourself. Sri Krishna Bhagwan Ji says that good qualities bring peace and happiness, and not so good qualities bring confusion and suffering. I found this chapter very easy to understand because these things are like things I see every day. Like when someone is kind and helpful, everything around them feels peaceful. And when someone is very angry or selfish, it affects everyone around them. I also thought about myself when I read this. Sometimes I also get angry or impatient over small things. And when I read this chapter, I thought, I want to slowly try to have more of the good qualities. Not because someone told me to, but because those qualities just feel better. They feel more peaceful inside. That is what I understood from chapter 16. Thank you so much for watching and listening today. If you like the video, please like, share and subscribe and click on the bell icon for future videos. Please also share this with your family and friends. Jai Shri Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद आशा अग्रवाल जी। इसका संक्षिप्त में हिंदी में अनुवाद बता देती हूँ मैं कि इस अध्याय में श्री कृष्ण जी अच्छे गुणों के बारे में और बुरे गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। अच्छे गुण कौन से होते हैं हमारे? जो निर्भरता, सत्य, दया, क्षमा, विनम्रता, सत्य कर्म पे चलते हैं, उनको अच्छे गुण बताया गए हैं। और असुरी गुण कौन से होते हैं? बुरे गुण, जैसे कि अहंकार, क्रोध, लोभ, झूठ बोलना, ये सभी हमारे दुखों का कारण बन जाता है। भगवान बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 मुख्य द्वार हैं, इसीलिए इनका त्याग करना चाहिए, देवी गुणों को अपनाना चाहिए, असुरी प्रवृत्तियों को छोड़ना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा चल सके। इसी के साथ हम नेक्स्ट अध्याय में आपके साथ आशा अग्रवाल जी के साथ मिलेंगे। सभी को राधे राधे।